हेलो गाइस। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो जो इंस्टाग्राम के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको एंगेजमेंट के रिगार्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। तो क्या मस्ट फॉलो है एंगेजमेंट में, आपको जो फॉलो करना ही करना है और ये मस्ट है अगर आपको अपना जो इंस्टाग्राम पेज है वो अगर ग्रो करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं एंगेजमेंट के लिए सिर्फ। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि न्यू इंस्टा एल्गोरिदम अपडेट क्या है और एंगेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, और नो मैटर व्हाट रिप्लाई टू कमेंट्स। ठीक है गाइस, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं न्यू इंस्टाग्राम एल्गोरिदम अपडेट की। तो गाइस जो न्यू सबसे लेटेस्ट जो भी चेंज हुआ है एल्गोरिदम के अंदर इंस्टाग्राम के, तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज अब जो इंस्टाग्राम है एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, इनका वेटेज जो दे रहा है आपके जो एंगेजमेंट है, आप जो यूज़र्स के साथ जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, वो चाहे वो यूट्यूब की बात करें, अगर फेसबुक की बात करें, चाहे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे है, जो इनके जो लेटेस्ट एल्गोरिदम अपडेट हैं सभी प्लेटफॉर्म के, वो ये है कि आपकी जो ऑडियंस एंगेज करती है आपके जो इंस्टाग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, यूट्यूब का वो हो गया, तो वहाँ पे आपको जो है एंगेज होना है अपनी ऑडियंस के साथ, कि आप ऐसा क्या कंटेंट डाल सकते हैं कि जो आपके यूज़र्स हैं, फ़ैन फॉलोअर्स हैं, वो आपके जो पोस्ट हैं उस पे कमेंट करें, उनको लाइक करें, शेयर करें। तो एंगेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो एंगेजमेंट, आप एंगेजिंग कंटेंट ऐसा डालिए, कुछ भी आप उनसे लाइक उनसे सर्वे करवा सकते हैं या फिर उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट जो आपको पोस्ट चाहिए किसके रिगार्डिंग चाहिए। तो जितने भी ज़्यादा आप हॉट या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप जो पोस्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगी आपकी। ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे आपकी कमेंट पे एक बार सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले, एंगेजमेंट एंड नो मैटर व्हाट रिप्लाई टू कमेंट्स। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे भी आपकी जो कोई भी पोस्ट है उस पर अगर आपका कोई भी कमेंट आएगा, नो मैटर व्हाट आपका कोई भी कमेंट आया था, चाहे इमोजी, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, इग्नोर्स कर देते हैं कमेंट को। चाहे कोई स्पैम अगर कमेंट भी कर रहा है तो उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना। आपके कमेंट या जो भी आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं, जो भी अननोन भी ऑडियंस आपके जो पोस्ट पे कमेंट कर रही है, जो भी लाइक उस पर शेयर करती है उसको, तो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। उसको कमेंट पे आपको जाके ज़रूर रिप्लाई करना, चाहे किसी भी टाइप का वो कमेंट हो। ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे इसमें इमेजो इमोजी है, इन्होंने कमेंट किया तो हमने भी इमोजी से रिप्लाई किया। तो कोई भी कमेंट कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट किस टाइप का वो कमेंट है, चाहे वो उन्होंने लिंक डाला है या फिर कोई भी उन्होंने इमोजी डाली है, कोई भी उन्होंने कमेंट उसमें लिखा है, तो आपको रिप्लाई उसका 100% करना ही करना है। ठीक है। तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं और उसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार कमेंट और चेक कर लेते हैं, कमेंट जैसे। ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं जैसे कमेंट्स आते हैं तो हम हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कमेंट हो, कोई लिंक शेयर हो या फिर उस पर कोई भी इमोजी अगर है जो रिप्लाई करता है, तो हम इमोजी का भी रिप्लाई इमोजी से करना होता है उस पर। तो अब ये समझते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है हर एक कमेंट का रिप्लाई करना। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ समझिए, जो इंस्टा एल्गोरिदम है वो भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। वो कोई उसको ऐसा तो है नहीं कोई उसको ह्यूमन कोई लाइक कोई उसको पर्सन चला रहा हो, एक काइंड ऑफ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है वो। तो जो उसमें जो न्यू अपडेट ये है कि कोई भी अगर आपके पेज पे आके अपने 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड कुछ भी अपना जो टाइम है इन्वेस्ट करके वो कमेंट कर रहा है आपके पेज पे, तो आपको उसको जो है वैल्यूएबल जो है, मतलब कोई भी आप उसमें कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जो भी आप अपने पेज पे पोस्ट कर रहे हो, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देना है इसमें। तो इंस्टाग्राम को क्या लगा कि जो आप जितने भी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आप वैल्यू दे रहे हो, उनको अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कमेंट किया और आपने उनको इग्नोर कर दिया सिंपली। चाहे वो आपकी एड पोस्ट हो, चाहे आपको जो कंटेंट हो, जो नॉर्मल पोस्ट हो, हमारी जो एड्स होते हैं हम उन पे भी मोस्टली सारे ट्राई करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हो सब पे हम रिप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे ऐड शो करता हूँ जो हम फेसबुक पे रन कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बार इसको लोड होने देते हैं, ये देख सकते हैं। तो गाइस जितने भी यहाँ पे जो कमेंट्स है वो होंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे कमेंट्स हैं हम सब पे रिप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी उस पर कमेंट, चाहे आपकी एड पोस्ट हो या फिर जो आपका नॉर्मल, जो भी आपकी जो नॉर्मल उसमें कंटेंट आप पोस्ट करते हैं उस पर हो, आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर देना, ताकि इंस्टाग्राम ऑलगोरिदम को वहाँ पे लगेगा कि जो आपके जो
फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो आपको जो वैल्यू टाइम निकाल के जो उस पे कमेंट पे पोस्ट कर रहे हैं, वो आप उनकी वैल्यू कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि आपके जो भी फ़ैन फॉलोअर्स उनको वैल्यू करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कमेंट डाला और आप सिंपली इग्नोर कर दो, या कुछ भी उन्होंने कमेंट, चाहे कुछ भी कमेंट डाले इमोजी, या फिर आपके कोई भी उसमें उसमें लाइक सेंटेंस या कुछ भी, किसी का लिंक शेयर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको उस पर रिप्लाई 100% करना ही करना है। ठीक है गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा होगी, चाहे आपके वो स्टोरीज पे आए, स्टोरीज पे अगर आपको कोई डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है, तो उस पर ही आपको रिप्लाई करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लाइक क्वेश्चन आस्क कर रहे हो आपसे या कुछ भी पूछ रहे हो, तो रिप्लाई आपको ज़रूर देना है, ऐसा नहीं कि सिंपली आप इग्नोर कर दो उसको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट यही है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का। ठीक है। तो जितना भी आप उसको आए तो उस पर ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर सिंपली आपको यहाँ पर जैसे एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, एंगेजमेंट हमने वैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनसाइट्स में आप कैसे इसमें कर सकते हैं। तो एक बार इसमें, ओके, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे दूसरा लॉगिन है। ठीक है, तो एक बार इसमें आपको एंगेजमेंट भी शो कर देते हैं कि कितने आप एंगेजमेंट, और आपको रफाइड, वैसे हमने इनसाइट्स में भी आपको बताया था ये चीज़ें। तो जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना ज़्यादा शेयर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आपको जो है ऑडियंस रीच आपकी ज़्यादा होगी पोस्ट की, और आपका पेज भी है जो उतनी जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, सो एक बार इस पे चेक भी कर लेते हैं, जो भी आपको जो है लमसम, अगर आपको पूरे अपने पेज पे देखना हो कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो कोशिश करिए जितने ज़्यादा कमेंट्स, कुछ भी कमेंट आए आपके, उस पर रिप्लाई ज़रूर करिएगा उस पर। एक बार इसमें ओपन कर लेते हैं। तो सेम आपको फेसबुक के लिए भी करना है। फेसबुक भी अगर आप कोई ऐड पोस्ट रन कर रहे हैं तो उस पर भी आपको रिप्लाई 100% ही करना है। पहले इस पर चेक कर लेते हैं हम। ओके, तो ये आपके स्टोरीज़ है यहाँ पे, और जो बाकी कमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो जिस पे आपके कमेंट आएंगे, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जिस पे आपको जो है रिप्लाई करना है, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने आप इस पर रिप्लाई दे रहे हैं। तो सब पे आपको रिप्लाई ज़रूर ही करना है उस पर, जितने भी आपके कमेंट्स हैं उस पर लाइक्स या शेयर्स हो। ठीक है गाइस। और या फिर डायरेक्ट मैसेज भी आपको कोई आ रहा है तो उस पर भी आपको रिप्लाई करना है। तो ये जो था न्यू एल्गोरिदम अपडेट है इंस्टाग्राम का, और ये मस्ट फॉलो है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा गाइस। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो आपकी जो पेज की रीच है डाउन होगी ही होगी उसमें। ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज को रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स कैसे कर सकते हैं, और आप कैसे उन सारे पोस्ट को ऑर्गेनिकली उनकी रीच बढ़ा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग यूज़ करके। तो हम यहाँ पे जानेंगे हैशटैग कैसे पोस्ट किए जाते हैं, कैसे आप नए हैशटैग उसमें एम्बेड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। तो जैसे कि हम यार यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, हमने ये पोस्ट करी थी, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स यूज़ किए हैं। ये सारे टॉप एंड ट्रेंडिंग हैशटैग थे जिनकी बहुत सारी पोस्ट लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी थी। तो हम एक वेबसाइट आपको बताएंगे कि कहाँ से आप टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग ले सकते हैं, कौन से लाइव हैशटैग्स हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैशटैग्स मिलेंगे। तो गाइस, उस वेबसाइट का यहाँ पे जो यूआरएल है ये है #allhashtags.com। यहाँ से आप जितने भी टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स होंगे वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड अपना डालना है, जो भी आपको कीवर्ड अपना सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप टॉप भी चूज़ कर सकते हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग वो यहाँ पे शो होंगे, जो रैंडम है वो यहाँ पे आएंगे, और जो लाइव अभी करंटली चल रहे होंगे लाइव हैशटैग्स वो यहाँ पे आएंगे। तो मान लीजिए कि हम जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, टॉप हैशटैग कौन से हैं, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे गाइस आपके जो बेस्ट 30 डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग्स हो गए वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग दिखा रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्च करके देखते हैं कि इसके एग्जैक्टली पोस्ट हैं कितने। तो डिजिटल मार्केटिंग की हम यहाँ पे पोस्ट चेक कर लेते हैं एक बार, कितनी पोस्ट लोगों ने पोस्ट करी ऑलरेडी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा पोस्ट इस
हैशटैग के ऊपर ऑलरेडी लोगों ने करी है, या मतलब इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी होंगे। और यहीं पे सेकंड इसका चूज़ करके देख लेते हैं एक बार हैशटैग्स। इसकी भी अराउंड 6,54,000 कुछ उसकी पोस्ट हैं और इसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पे जो जितने भी टॉप हैशटैग्स होंगे वो अपनी पोस्ट में डाल के यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने इतने सारे हैशटैग यहाँ पे चूज़ कर रखे हैं। तो बस सिंपली आपको करना क्या है, आप कॉपी करने हैं हैशटैग्स को, और अपने मोबाइल से अगर आप यूज़ करें तो मोबाइल से आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। मोबाइल से आप अपने कॉपी पेस्ट करके हैशटैग्स को डाल सकते हैं। और अगर आप वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप से ही बता देते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप से कैसे आपको पोस्ट करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे हम पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार हैशटैग को। हम यहाँ पे जो न्यू पोस्ट करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के हैशटैग पे हम पोस्ट करेंगे। तो हमने जनरेट किया यहाँ पे हैशटैग्स को। तो आपके यहाँ पे टॉप 30 एंटरप्रेन्योर हैशटैग्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे इनको कॉपी करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। तो यहाँ पे आपका खुल चुका है, ये मोबाइल वर्जन इसका यहाँ पे। तो हम सिंपली यहाँ पे प्लस साइन को क्लिक करेंगे, अपनी इमेज जो है वो चूज करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और प्लीज फॉलो अस फॉर मोर स्टफ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हैशटैग हमेशा हम नीचे पोस्ट करते हैं। हमने कॉपी कर रखे थे हैशटैग, तो हमने सारे यहाँ पे कॉपी कर दिया इनको। तो सिंपली आप क्लिक शेयर पे करेंगे हम यहाँ पे, जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। हम तो वापस एक बार इसको डेस्कटॉप वर्जन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और एक बार रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे हम। तो ये भी गाइस सिंपली तरीका है, अगर आपको लैपटॉप से अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे हो चुकी है। तो लेट्स सी, जो हमने पोस्ट करे थे यहाँ पे, और पोस्ट करिए यहाँ पे, 1 लाइक आपका आ भी चुका है, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स यहाँ पे टॉप वाले यूज़ किए थे अपनी पोस्ट में। तो गाइस अब डिफरेंट डिफरेंट टॉप हैश जितने भी ट्रेंडिंग होंगे वो सारे अपने पोस्ट में यूज़ कीजिए, ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक फॉलोअर रीच है वो बढ़ेगी। और डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स को भी आप ट्राई करते रहिए, और हो सके तो आप 25 टू 30 के आप बीच में यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो होती है हैशटैग्स की वो 30 होती है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग यूज़ करके अपनी जो ऑर्गेनिक रीच है उसको इंक्रीज़ करिए, और जिससे कि आपके जो पेज फॉलोअर्स हैं वो भी आपके इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो ट्रिक थी वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और अच्छी आपको जो ट्रिक है वो शेयर करेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके जो इंस्टाग्राम के लेटेस्ट अपडेट्स हैं 2020 के, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जो है फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आज हम टॉपिक्स जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, तो गाइस आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से जो लाइक लोग होते हैं अपने अकाउंट पे बहुत सारे फेक फॉलोअर्स की इंक्रीज़ करते हैं। तो बिल्कुल आपको वैसा गाइस नहीं करना है। आपको अपने अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ करने हैं, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है डायरेक्टली शैडो बैन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो रीच भी होती है अकाउंट की वो भी बहुत कम हो जाती है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है अपने लाइक आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा उसके पे बिल्कुल भी आपको जो फॉलोअर्स हैं फेकली नहीं बढ़ाने हैं। आपके जितने भी अकाउंट पे मतलब जितने भी फॉलोअर्स होंगे जेन्युइन फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रीच है ज़्यादा रहे।
फेक फॉलोअर जितना आप बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा, आपका अकाउंट जो है शैडो बैन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको जो फॉलोअर्स है फेक नहीं करने हैं, ताकि आपके जो अकाउंट की रीच है वो डाउन ना करें इंस्टाग्राम। ठीक है, तो फेक फॉलोअर्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट जो आपका यहाँ पे हम होगा, ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा प्रोफाइल एसईओ। ठीक है, तो प्रोफाइल एसईओ में आपको क्या करना है कि आपका जो भी लाइक प्रोफाइल होगी उससे रिलेटेड ही आपको पोस्ट करना, उसमें जो आपकी नीश होगी, जैसे हमारी नीश है वेबसाइट डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, तीनों आपस में रिलेटेड नीश हैं। ऐसे ही आपको कोई एक स्पेसिफिक नीश अपनी लाइक चुननी है, और उसमें ही आपको जो अपना कंटेंट है सारा पोस्ट करना है। जितना भी आपका जो कंटेंट होगा सारा हाई क्वालिटी का इसमें कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड जो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर कोई लोग सर्च करें तो आपकी प्रोफाइल जो है ऊपर रैंक कर सके उसी हैशटैग के अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग भी सर्च करता है तो हमारी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि हमारी जो प्रोफाइल है उनको ऊपर शो होगी। ठीक है, तो आपको इसमें अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी अपने लाइक अकॉर्डिंगली रखना है। आप कीवर्ड उसमें डाल सकते हो जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। बाकी बात आती है नेम की, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तब उसमें आपका लाइक कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लाइक उसमें जनरली कोई अकाउंट बनाया आपने जिसमें आप कीवर्ड के थ्रू फोकस करना चाहते हो तो आप उसमें कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हो अपने यूज़र नेम में। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई अपना इसमें क्लोथ सेल कर रहे हैं तो कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेस्ट, आपका यूज़र नेम हो जाएगा एट बेस्ट मैन शॉपिंग। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बेस्ट मैन शॉपिंग भी आ गया। अगर आपको चेंज मतलब कुछ डिफरेंट यूज़ करना है अपने कीवर्ड के अंदर, तो आप इंक्लूड कर सकते हो कीवर्ड अपने यूज़र नेम के अंदर, ताकि जितना भी आपकी रैंकिंग हो ऊपर से ऊपर हो सके। ठीक है, तो ट्राई करना आपको कि आपका जो, उसको मैं यहाँ पे हराने देता हूँ। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि आपका डिस्क्रिप्शन में भी जो आपका कीवर्ड है वो आप इजीली उसको डाल सकें। यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो बार डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया, एक हैशटैग में और एक नॉर्मली स्टेटमेंट में। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड एक तो आ जाए, और अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जैसे नहीं जाना चाहते हैं, जनरली आपको नॉर्मल नेम चुनना है, तो उसमें आप अपना कीवर्ड लगा सकते हो अपने यूज़र नेम में भी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कीवर्ड इन यूज़र नेम। ठीक है, तो प्रोफाइल का आपको एसईओ प्रॉपरली अपना करना है, और जितना भी आप लाइक कंटेंट पोस्ट करेंगे सारा हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आएगा पोस्ट एसईओ। जितनी भी लाइक आप पोस्ट यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई सैम्पल पोस्ट दिखाऊं इसमें। ठीक है, तो जैसे ये सैम्पल पोस्ट चेक करते हैं तो इसमें भी देख सकते हैं आप जितना लॉन्ग से लॉन्ग आप इसमें डिस्क्रिप्शन डालेंगे उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी जो पोस्ट है ज़्यादा रैंक करेगा। तो डिस्क्रिप्शन आपको जो है कोशिश करनी है बहुत लंबा जितना भी आप लिख सकें। जरूरी नहीं है कि आपको अपना खुद का कंटेंट लिखना है, आप थोड़ा सा गूगल से भी लाइक रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपनी एक पोस्ट डाल रहा हूँ तो यहाँ से मान लीजिए ये कंटेंट मैं ले सकता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर सकता हूँ अगर किसी पोस्ट में जाके, तो वो भी कंटेंट मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको अगर खुद लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप गूगल से भी कंटेंट थोड़ा उठा सकते हैं, जिससे कि आपका जो पोस्ट का एसईओ होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा पोस्ट रैंक करने में। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको जो हाई क्वालिटी कंटेंट यूज़ करना ही है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी होंगी। तो आपका इसमें गाइस एक तो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, एंड देन जो आपका होना चाहिए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पोस्ट में।
ठीक है, तो जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंटेंट होगा काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब ईमेल से रिलेटेड होना चाहिए, अनरिलेवेंट कंटेंट आपको नहीं डालना है। और उसके नीचे आप यहाँ पे अपना जो भी आपका यूज़र नेम होगा फॉलो के लिए डाल सकते हैं, और उसके नीचे आप हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 to 4 पैराग्राफ भी आप यूज़ करोगे तो आपके लिए सही रहेगा इसमें, और जो पोस्ट की रैंकिंग होगी वो अच्छी खासी आपकी ऊपर रैंक होगी उसमें। ठीक है, देन बारी आती है आपकी पॉपुलर हैशटैग्स यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग्स यूज़ करेंगे अपने, लाइक जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, उतना ही ईजी होगा आपकी जो पोस्ट होगी वो रैंक करने की, या जितने भी मतलब उसमें लाइक्स आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें देख सकते हैं जैसे हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 हैशटैग यूज़ किए हैं, तो जनरली आप जो अपनी वेबसाइट पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है इंस्टाग्राम की वो 30 हैशटैग होती है। ऑन एन एवरेज अगर आपको यूज़ करना है तो आप अराउंड 10 to 15 यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने, आपको स्पैम नहीं करने हैं हैशटैग। और आपको जो है पॉपुलर हैशटैग्स यूज़ करने हैं, तो मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ तरीका कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जनरली जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, तो 10 to 15 हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। और फेमस हैशटैग जो आपको, ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा ही था, allhashtag.com पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने जो भी मान लीजिए एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग हम यहाँ पे जनरेट करेंगे हैशटैग। ठीक है, तो ये टॉप 30 हैशटैग आगे जिन पे सबसे ज़्यादा पोस्ट होंगी, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 10-12 जितनी उठानी है टॉप हैशटैग्स, वो उठा के सीधा आप अपनी पोस्ट में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और अगर आपको ऐसे सर्च नहीं करना तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप टॉप जितने भी मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट होंगी वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों वेज आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितने आपको हाई पोस्ट हैशटैग्स के देखने हो तो आप या तो यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हैं, फिर अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो सिंपल जाके सर्च करके यहाँ से कॉपी पेस्ट आप करेंगे उसमें। ठीक है, तो पॉपुलर हैशटैग यूज़ करने हैं, 10 to 15 नॉर्मल रहता है, मैक्सिमम लिमिट 30 होती है, तो आपको ज़्यादा भी उसमें स्पैमिंग नहीं करनी। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है वो आता है मेंशन प्रोफाइल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आपकी जो मान लीजिए जो भी आपकी निश है, जो भी आपकी मतलब टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोफाइल्स को मेंशन करना है। तो मान लीजिए जैसे हमारी निश है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग से जो भी रिलेटेड प्रोफाइल्स होंगी हम उनको मेंशन कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। तो क्या होगा, जैसे कोई मतलब उनकी जो प्रोफाइल्स है वो सर्च करेगा तो उसमें भी टैग्ड उस पोस्ट में हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र की प्रोफाइल। तो यहाँ पे भी चांसेस होंगे कि हमारी प्रोफाइल पे जो लोग हैं, यूज़र हैं, वो विज़िट करें और हमारे पेज को फॉलो करें। तो आपको जो है अपने निश रिलेटेड प्रोफाइल्स ही मेंशन करनी है, इररिलेवेंट आपको नहीं मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, सो जो भी आपकी निश होगी उसके हिसाब से ही आपको जो प्रोफाइल्स हैं आपके सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट की, उन प्रोफाइल्स को आपको मेंशन करना होगा अपनी पोस्ट पे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए कोई दूसरे अकाउंट पे भी सर्च कर रहा है तो उसके थ्रू भी आपके अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो सके। और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, हाई क्वालिटी कंटेंट होगा आपका, तो चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि आपको लोग जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है लोकेशन का। ठीक है, तो इस फीचर को भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना यूज़ कीजिए। और लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, कि मान लीजिए आप अपने जैसे नियर बाय कोई भी सर्च करेगा लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होगी। तो ये भी आप जो फीचर है मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल, जब भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं करते हैं तो लोकेशन का ऑप्शन आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक करके भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, सो आप इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे डालते हैं, इमेज मान लीजिए आपने सेलेक्ट करी, एंड देन यहाँ पे आप जब पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड लोकेशन का। तो यहाँ पे जो आपको अपनी ऐड लोकेशन डाल सकते हो आप यहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए मेरे को दिल्ली के अंदर ही पोस्ट करना है, तो दिल्ली यहाँ पे मैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चांसेस क्या होंगे, जो इतने भी यूज़र्स दिल्ली के आसपास के होंगे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पोस्ट है शो होगी। ठीक है, तो लोकेशन का आपको फीचर हमेशा यूज़ कर सकते हो आप अपनी, जब भी आप पोस्ट डाल रहे हो। चांसेस बस ये होंगे कि अगर आपको लोकेशन वाइज भी अगर कोई सर्च करता है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होगी उस लोकेशन पे। ठीक है, तो लोकेशन का भी आपको जो है यूज़ बहुत करना है अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो लोकेशंस को। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है एंगेजमेंट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि आपकी जो एंगेजमेंट होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे आप उसमें रेगुलर पोस्ट डालो, स्टोरीज डालो, या फिर आप लाइव उसमें लाइव सेशंस भी रिकॉर्ड करके डालो। जितना भी और हो सके तो आप लाइव भी आ सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा IGTV का भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी जितने भी लॉन्ग वीडियोस होते हैं वहाँ पे भी पोस्ट करते हैं। तो एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ज़्यादा लोगों को विजिबल होगा, और उतने ही चांसेस होंगे कि लोग आपके जो अकाउंट को है फॉलो करें। ठीक है, तो रेगुलर पोस्ट आपको करनी है। रेगुलर पोस्ट में लगभग आप 2 से 3 पोस्ट डाल सकते हो पर डे। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जो अकाउंट है उस पर आप ज़ीरो पोस्ट कर रहे हो, 2-3 दिन हो गए आपने कुछ पोस्ट ही नहीं किया। तो रेगुलर पोस्ट करनी है आपको अपने अकाउंट पे, ताकि लोगों को भी, जितने भी आपके फॉलोअर्स होंगे उनको पता रहे कि आप एक्टिव हैं अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे 2 to 3 पर डे। ठीक है, तो रेगुलर पोस्ट आपको डालनी होंगी। उसके बाद स्टोरीज में आप एंगेज कर सकते हैं यूज़र को। आपने बहुत बार देखा होगा कि वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है पोल का, या फिर कुछ भी इमोजेस हो गए, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो स्टोरी में, ताकि एंगेजमेंट वहाँ से बढ़े, और कोई अगर आपकी स्टोरी पर रिप्लाई दे रहा तो वो भी और अच्छी बात है। देन लाइव आ सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, और IGTV का आप लॉन्ग वीडियोस इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है फॉलो एंड अनफॉलो का लास्ट में। ठीक है, तो आपके जो भी निश रिलेटेड अकाउंट्स होंगे आप उन पे जाके जो है, एक बार मैं इसको और इंक्रीज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो जो भी आपके जो अकाउंट होंगे सिमिलर टाइप के, जो भी आपके निश होंगे, आप उन अकाउंट्स पे जाके यूज़र्स को पहले फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ये करा। ठीक है, तो इसमें एक्टिव देखते हैं तो गाइज, ठीक है, तो जो भी आपकी निश रिलेटेड अकाउंट्स होंगे आप उन पे जाके जो भी एक्टिव होंगे उन फॉलोअर्स को आप फॉलो कर सकते हो, और जब आपको वो फॉलो बैक कर लें तो आप उनको अनफॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके निश रिलेटेड अकाउंट्स होंगे सिर्फ उसमें ही आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो भी यूज़र्स हैं, जो भी आपके निश के सिमिलर अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके अकाउंट में भी इंटरेस्टेड हों। तो आपको उन फॉलोअर्स को भी जाके फॉलो करना है, और जैसे आपको फॉलो करें आप उनको अनफॉलो बैक कर सकते हो। तो सिंपल ठीक है, और इसमें भी आपका ये है कि मिनिमम इसमें आपको ज़्यादा भी ये नहीं करना है, 10 to 15 आवर्स पर आवर इसमें कर सकते हो।
अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फिर उसमें स्पैमिंग में होता है और इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बैन कर देगा। ठीक है, तो रिलेटेड निश अकाउंट्स पे आपको ये फॉलो करनी चाहिए। एंड 10 to 15 अकाउंट्स आप फॉलो कर सकते हो पर आवर। ठीक है, तो ज़्यादा भी इसमें आपको स्पैमिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको अपने निश रिलेटेड अकाउंट्स में जो है फॉलोअर्स को जाके फॉलो करना है पहले, और अगर आपको फॉलो बैक कर लें तब आप उनको अनफॉलो कर सकते हो। तो सिंपल ट्रिक आप ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंस्टाग्राम के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं 2020 के, और क्या क्या लोग ट्रिक्स इसमें फॉलो कर रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनिकली बढ़ाने के लिए। मैं इसमें ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली आप कैसे लोग इसमें जो अपने अकाउंट्स पे जो है फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा इनको रिकैप कर लेते हैं एक बार। फेक फॉलोअर्स आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाने अपने अकाउंट पे। उससे बस यही हुआ कि आपके जो अकाउंट की रीच होगी वो इंस्टाग्राम डाउन कर देगा। और जब भी आप हैशटैग डालोगे आपका जो अकाउंट है वो उस पर शेडो बैन हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट उन हैशटैग्स पे शो नहीं करेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं, आप इतने फॉलोअर्स बढ़ा लो और वो एक्टिव फॉलोअर्स ही ना हो, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ना तो आपको रेवेन्यू अर्न करके देंगे, ना ही वो एंगेजमेंट देंगे आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रोफाइल एसईओ। तो आपको जो कीवर्ड्स हैं अपने लाइक यूज़र नेम के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ताकि कोई भी सर्च करे उस हैशटैग को तो आपकी जो प्रोफाइल है वो भी ऊपर रैंक कर सके। ठीक है, उसके बाद आप उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पोस्ट एसईओ। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट डालना, उसमें लॉन्ग जितना हो सके आपको पोस्ट के अंदर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखना है, ताकि जब भी कोई उस हैशटैग के रिगार्डिंग सर्च करे तो आपकी जो पोस्ट है ऊपर आ सके। आपके मतलब जो भी एक्सप्लोर में कोई भी सर्च करे तो आपकी जो पोस्ट है ऊपर दिखे उनको। हैशटैग आप 10 to 15 अप्रॉक्सीमेटली अपनी प्रोफाइल पोस्ट के ऊपर यूज़ करोगे, और हो सके तो पॉपुलर हैशटैग्स ही यूज़ करें आप, ताकि जितनी भी आपकी लाइक पोस्ट होगी ऊपर से ऊपर डिस्प्ले करे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग उसमें आ सके। प्रोफाइल आपको मेंशन करने सिर्फ अपने रिलेटेड निश की जो प्रोफाइल्स होंगी 3 से 5 आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लोकेशन, आप नियर बाय जितनी भी लोकेशंस होंगी आसपास की उनको अपनी लाइक पोस्ट पे मेंशन कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन के हिसाब से कुछ मतलब उस पर सर्च करेगा हैशटैग को तो आपकी जो चांसेस होंगे आपकी पोस्ट के ऊपर आने के हो जाएंगे। एंगेजमेंट, आपको जो अपना अकाउंट है पूरा एक्टिव रखना है। आपकी जो लाइक पोस्ट होंगी 2 से 3 आपको रेगुलर पोस्ट इस पर करनी होंगी। एंड आप इसमें स्टोरीज भी डाल सकते हो और लाइव से लाइव भी आ सकते हो अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि आपके जो एंगेजमेंट होगी, लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंस्टाग्राम से ज़्यादा होंगे यूज़र्स के आपके अकाउंट के लिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी यूज़र को भी रहेगा उतना ही लाइक पता रहता है कि आपका जो अकाउंट है ज़्यादा एक्टिव है और आप लाइक फ्रेश कंटेंट डेली बेसिस पे डाल रहे हो। ठीक है, देन आपका अनफॉलो एंड फॉलो, आपको अपने रिलेटेड निश अकाउंट में जाके यूज़र्स को फॉलो करना होगा। और ट्राई कीजिएगा कि एक्टिव फॉलोअर्स को मतलब आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मतलब नॉन एक्टिव जाके। तो सिंपल बेस्ट वे तरीका ये है, जो भी लेटेस्ट पोस्ट आई हैं उन पे जाके आप देख सकते हैं लाइक्स, मतलब कितने लाइक्स आए हैं, और उन लाइक्स के यूज़र्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपको फॉलो बैक करें आप उसमें अनफॉलो कर दोगे। ठीक है, इस पर और आप 10 to 15 ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आपके मेजरली जो पॉइंट है ऑर्गेनिक वे है, जिससे कि मतलब कोई इसमें आपको पेड नहीं करना, कुछ पे नहीं करना इसके लिए। और ऑर्गेनिकली आपका जो कंटेंट है इसमें मतलब ऑर्गेनिकली जो भी ऑडियंस है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे एक पॉइंट और लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस बिल्ड होगी टॉपिक सेंट्रिक बिल्ड होगी। आपका जो भी मतलब कंटेंट है, निश है, आपकी जो ऑडियंस है सिर्फ उसी के हिसाब से आपकी बिल्ड होगी। जिस ऑडियंस को मतलब आपके जो मतलब आपका जो कंटेंट है उसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा, वो आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे इस वे के थ्रू। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ताकि आपकी जो भी ऑर्गेनिकली ऑडियंस है वो बिल्ड हो सके। और बिल्कुल मतलब आपकी टॉपिक सेंट्रिक ऑडियंस
बिल्ड हो रही है, जिससे कि मतलब जो भी आपके यूज़र्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करेंगे आपके अकाउंट से, क्योंकि आपने जो ऑडियंस है वैसी ही बिल्ड करी है अपने अकाउंट के हिसाब से, जिनको आपके कंटेंट में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको जो है ये फॉलो करने हैं टिप्स, और आपके जो फॉलोअर्स होंगे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे 110%। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने पॉइंट्स है समझ आ गए होंगे, एंड आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। ठीक है, तो Introduction video. There are so many reasons to get excited about the Instagram platform. It now has 1 billion active users, and businesses of all kinds are seeing excellent results from setting up a profile and advertising with Instagram. Instagram ads are not the most expensive way to promote your business and brand, but it is not a cheap option either. So you really need to get it right to see the highest returns. And this is what this guide is all about. Many online marketers know about the power of Instagram and that it can be used to reach their target audience. But they don't go about this in the right way and then end up claiming that advertising on Instagram doesn't work. It does work. You just need to know what you're doing. In this guide, we will take you by the hand and guide you step by step through the process of creating successful Instagram ads. We will show you how to identify your target audience correctly and explain how you can choose the right type of Instagram ad to connect with them in the best way. Engagement is the most important thing with social media, and we will share with you how you can boost your engagement levels with all of your Instagram ads. The harsh reality is that a lot of Instagram ads get very few or no views, and this is a situation that can be avoided with the right planning. Use the techniques in this guide to create really successful Instagram ads. Once you have achieved your first successful ad campaign, you can go on to create many more and get a great return on your investment. Why Instagram ads? Why should you consider using Instagram to market your brand and your business when there are other social media platforms available? Well, one of the main reasons is that there are more than 1 billion active users each month on Instagram. Every day there are more than 500 million users on Instagram. The platform has seen explosive growth since its launch in 2010. Did you know that Facebook now owns Instagram? The CEO of Facebook, Mark Zuckerberg, was quick to see the potential offered by Instagram and decided to buy it for $1 billion just 18 months after it launched. More and more businesses have realized the power of Instagram. Most of the world's top brands now have an Instagram account, and it will not be too long until they all do. So surely it makes sense for you to use Instagram for your marketing. Here are the major benefits of using Instagram for marketing a business. More than a third of Instagram users have purchased through the platform. The end game with any advertising is increased sales. Whether this is done by generating leads first doesn't matter. You are looking for more sales in exchange for your advertising bucks. So, will Instagram advertising help to increase your sales? Well, here are a few facts about Instagram. More than 33% of Instagram users have used it to make a purchase of a product online. This means that an Instagram user is 70% more likely to make a purchase than a non-Instagram user. Think about the numbers here. With 1 billion active users, this means that 33% is over 333 million people that have made a purchase online through the platform. That's a staggering number of potential customers that could be interested in what you have to offer. A lot of these users have a history of buying from Instagram. Another interesting fact is that around 75% of Instagram users will take action after viewing an Instagram advertising post. They will visit your website if that is what you want them to do. If you want them to click a Contact Us or Shop Now button, they will do this too. If an Instagram user does not take the action that you want them to, then you have the capability to retarget them over and over again until they do take the required action. This is a powerful feature of the Instagram advertising service. Very advanced social media targeting. Instagram being owned by Facebook is a very good thing. It is well known that Facebook has very advanced targeting functionality, and they have brought this to Instagram too. You can display your ads to a targeted audience such as a specific age group, people with specific interests, people from specific locations, people that exhibit specific behavior. Once you have specified your target audience in Instagram, you have the ability to retarget them as we mentioned earlier. You can customize your retargeting to take into account engagement with Instagram posts, video views on Instagram, customer email lists, and more. With this kind of targeting functionality, you can take your marketing to the next level with Instagram.
You can set up specific sales funnels for your Instagram ads that will achieve the results that you are looking for. You can track sales and leads. There is no point spending money on any form of advertising if you can't measure the effectiveness of it. The good news is that Instagram has the same comprehensive tracking features that the Facebook platform has. You can track everything, including clicks on links, leads generated, and conversions. If you want to see the cost per result, then this is also possible. It's possible for you to measure just about everything. If you want to break down results further, you can see where leads come from, what device they're using, etc. We would always recommend that you split test your ads, and this is easy to track with Instagram Analytics. The metrics available with Instagram ads are very comprehensive and provide advertisers with the feedback that they need. Tap into an unreached customer base. Statistics show that 50% of people on Instagram will view the profile of businesses that they like on a daily basis. If you don't have an Instagram account, then you will miss out on this kind of action. It is unlikely that you will be able to find the same level of customers using other advertising channels outside of Instagram. When you establish your Instagram presence, you really will be able to tap into a market of potential customers that would be very difficult, if not impossible, to replicate elsewhere. Build your audience organically. One advantage that Instagram has over Facebook is that you can build an audience organically that will stay in touch with your brand. You can create a natural relationship without using ads rather than have to force it with ads as you do on Facebook. Once you start to get followers, this will grow organically through word of mouth. When an Instagram user follows your business, they decide that they want to see your posts on their timeline. This is great for developing initial interest, which you can then build on. You can make relationships stronger. Brand engagement on Instagram is 10 times higher than it is on Facebook, 54 times higher than on Pinterest, and 84 times higher than on Twitter. With engagement rates on this scale, you can expect more interaction with your posts organically. If a user likes a post on Instagram, this is archived in their personal Posts You've Liked section. This is a bank of images that they liked on the platform that they can access at any time. You can use this to stimulate conversations and comments with your followers. Learn what your audience likes and dislikes. You can learn a great deal about your audience with Instagram. How good would it be to know what they like and dislike? When you know this, you can create specific ad campaigns around this information. It is easy for you to see what kind of content your audience likes and the content that they don't like. You can also see the kinds of Instagram accounts that they like to follow. All of this will help you to provide your audience with the content that they are really looking for. The visual advantage. If you didn't already know, Instagram is a visual platform for images and videos. Text can be added, but it is not mandatory. This is great because people are far more likely to remember what they see rather than what they hear or read. Videos are the best media for engagement on social media. Images will also outperform text-only posts significantly. You can create videos and images that really make your business stand out for higher engagement and increase your chances of converting followers into customers. What are Instagram ads? Instagram first offered ads back in 2013, but it wasn't until 2015 that this was opened up to everyone. Once businesses started using Instagram ads, they found them to be very effective. At the time of the writing of this guide, the average cost per click of Instagram ads is about 70 cents to 80 cents. This comes from an analysis of over $300 million in ad spend on the platform. This is an average cost, and it is possibly that your Instagram ads could cost considerably less depending on a number of different factors. The time of year the ads are placed affects the costs, with the last quarter of the year having the highest average costs. There are 5 different Instagram ad formats, which are 1. Stories, 2. Photos, 3. Videos, 4. Carousel, 5. Collection. Each one of these formats are interlaced with Instagram user feeds and stories, ensuring that the Instagram user has a non-disruptive experience on the platform. There are also a number of different calls to action that you can use to generate more leads. You can see these as we explain each of the 5 formats. Stories ads. With Instagram Stories ads, you can use the following call to action buttons: Apply now, Book now, Contact us, Call now, only using video, Download. An Instagram Stories ad is full screen and will appear between user stories. There are around 500 million users viewing stories each day, so there is massive potential with this type of ad. When you go for a Stories ad, you can specifically target your audience and decide on how often they will see the ad.
All stories expire after 24 hours on Instagram, so stories ads are best for limited time offers. You can use the number of filters with your stories ads, such as adding video effects, face filters, and text. The idea here is to create a really fun ad. It is really important that your stories ad looks like a normal post for a consistent experience. Users will swipe up calls to action and then automatically visit your website. Photo ads, also known as image ads. You can use the following call to action buttons with photo ads: apply now, book now, call now, contact us, get directions, learn more, get showtimes, download. With photo ads, you will be showcasing your products and services through engaging images. If you already use these kind of images in your marketing, then you can leverage the power of Instagram to share these with a larger audience. There have been a number of success stories using photo ads. Video ads. Here are the call to action buttons you can use with video ads: apply now, book now, call now, contact us, download. Video is the favorite media choice of Instagram users. Time spent watching videos on Instagram has increased significantly, around 80% year on year. So Instagram have made it very easy for advertisers to run video ad campaigns. There have been some incredible success stories with Instagram video ads. Carousel ads. With carousel ads, you can use the following call to action buttons: apply now, book now, contact us, call now, download. The idea with carousel ads is that users can swipe through a series of videos or images that all have a call to action button that will send them to your website. With a carousel ad, you can showcase multiple products, share a story with multiple parts, perform a deep dive into a single product with up to 10 videos or images. If you want to show versatility, then carousel ads are a good choice. Collection ads. You can only use 2 call to action buttons with collection ads, which are learn more, purchase. Collection ads have only been available since 2018, and the idea is pretty simple. When a user sees an ad from you, they will be able to make a purchase directly from the ad. You can use the power of video and images in your collection ads. They can be a very cost-effective way of increasing product sales, setting goals, and the best Instagram ad format for your business. Before we get into choosing the best format of Instagram ad for your business, it is important that you understand the objectives that Instagram publish about their advertising solutions. At the time of writing this guide, they could be summarized as follows. To increase the number of clicks to the customer's website, you can decide what section of your website you want the Instagram user to be directed to. Instagram ads should lead to a higher number of conversions. The ads can persuade people to take specific actions on your website. If you have a mobile app, then you can use Instagram ads to drive up the number of installs. You can use Instagram ads to increase activity with your mobile phone app. You can use Instagram ads to drive up video views. With Instagram ads, you can achieve predictable reach and have a greater level of control over message frequency. You can use Instagram ads to drive page post engagement. You can use Instagram ads to create mass awareness to a broad audience with guaranteed impressions. It is very important that you decide on the best Instagram ad format for your marketing campaigns. In order to make this decision, the starting point is always the goal that you have in mind. You need a social media goal. This will act as your guiding light when it comes to Instagram ads. Your goal will help you to decide what you should pursue, and almost as importantly, what you shouldn't pursue. We highly recommend that every Instagram ad campaign that you run has its own goal. There are 3 main goal options when using Instagram ads, which are 1. Raising the awareness of your brand. 2. Finding potential customers. 3. Increasing sales or conversions. When you are looking to increase your brand awareness, ask yourself this question. What is your brand all about, and why should anybody care? You need to create Instagram ads that will grab the attention of users. Increasing brand awareness is the most popular ad campaign goal on Instagram, so you need to be prepared for a fair amount of competition. It is really important that you focus on creating a memorable ad which stands out. If your goal is to find more potential customers through lead generation to get them on your email marketing list, for example, you can do this by creating a lead-centric ad. The aim here is to drive Instagram users to your website. You can also use this kind of ad to collect more potential customer details and to increase engagement through the use of messages. What about if you want to increase sales or conversions with your Instagram ads?
An example of a conversion could be the downloading of your mobile app. You could also offer an incentive with your ad, such as a discount coupon. So, as an example, if increasing the awareness of your brand was one of your social goals, then it would be better for you to choose a photo ad or a video ad rather than a collections ad. A photo ad or video ad allows you to drive traffic to your website, whereas a collection ad is all about selling directly from the ad. With a brand awareness campaign, your aim is to provide the most captivating content to your audience as you can. If you have already established your brand and you just want to sell more products, then a collections ad would be a good choice, as Instagram users can make a purchase directly. Maybe you want to showcase a number of new products that you are launching. In this case, it is best to go for a carousel ad so that you can present your products with different images and videos to your audience. So, the advice with choosing the right Instagram ad format is simple. Which ad formats align closely to your goals? Identifying your target audience. Identifying your target audience is critical to your success with Instagram ads. If you get this wrong, then your whole ad campaign can end up being a waste of money and time. Fortunately, Instagram has a lot of good tools to help you to identify your target audience. A lot of people think that Instagram is just for teenagers who like to take selfies. There is certainly an element of that going on, but there's a lot more besides. While it is true that Instagram appeals to a younger demographic, older people do use it as well. Here's the demographic breakdown. 18 to 29-year-olds make up around 55% of the user base. 30 to 49-year-olds make up around 28% of the user base. 50 to 64-year-olds make up around 11% of the user base. And adults over 65 make up around 4% of the user base. Another interesting thing is where Instagram users live. These are the latest location demographics. 32% of Instagram users live in urban areas. 28% of Instagram users live in the suburbs. 18% of Instagram users live in the country. There are more female Instagram users than male users, but this gap is a lot less now than it used to be. It is predicted that a lot more adults in their 30s will be using Instagram in the near future, just as this happened with Facebook. You should at least have some idea about who your target market is. If you are not 100% sure, then this is okay, as you can learn more about your audience as you progress with Instagram ads. But you don't want to be wildly wrong about your target audience, otherwise you can end up spending a fortune on ads and not achieve anything. Your core marketing persona. The best way to start to identify your target audience is with your core marketing persona. Other nuances can come later once you start to dig around into Instagram Insights and your Instagram Analytics after running some ads. So, we recommend that you start with a simple persona. For example, female, age 18 to 30, lives in the USA. Once you have established this base persona, you can use the tools available with Instagram and third-party tools as well to go deeper. There have been a number of significant improvements to the options available for ad targeting with Instagram. There are also some external tools such as Falcon that will help you to learn more about your audience. One of the best ways to find out more about your audience is to look at your engagement on your old posts to see which content they responded the best to. This will really help you to avoid creating Instagram ads that will not provide your audience with what they are looking for. With Instagram, it is possible to create a custom audience based on the people that have interacted with your posted content on the platform already. If you have a list of business contacts, you can also upload this to help create your custom audience. Set up your target audience. One of the great things about using Instagram ads is that you will use Facebook's existing and comprehensive knowledge of demographics to present your ads to the right people. So, for example, using your base persona if you want to target females between 18 and 30 that live in New York and are interested in healthy eating, then you can easily do that. Here are the most important audience targeting options that you have with Instagram ads. Location targeting. You can choose to target a specific country, region, state, city, and even zip code. You can include or exclude specific places as well if you want to do that. Age targeting. You can choose age ranges from 13 years old to over 65 years old. Gender targeting. You can choose to target males, females, or both. Language targeting. It is recommended that you leave this blank unless the language you are targeting is not common to your targeted location. Demographic targeting. You can get into a lot of detail here. There are a lot of subcategories to choose from, and some of these have subcategories. As an example, you can select the home category, then the home ownership subcategory, and then choose renters.
There are demographic choices around education, finances, life events, parents, politics, relationships, and more. Interests targeting. Again, you will find a number of categories and subcategories here. As an example, you can find people that have an interest in aviation or fine wines or science fiction movies here. There are so many possibilities. Behavior targeting. This is another targeting area with a lot of choices. For example, you may be interested in a specific job role, purchasing behavior, anniversaries, and a ton more. Connections targeting. You can use this to target people that have connected with your app, event, or page. Lookalike audience. You also have the option to create a lookalike audience. Let's say, for example, that you created a custom audience, but you have tapped them all out. Well, you can ask Instagram to find a lookalike audience comprising of people that have similar traits to your custom audience. Your audience guide. After you have made your choices to configure your target audience, you will be shown a guide that explains how specific or broad your audience is. You will be told how broad your audience is, the potential reach in numbers, and your estimated daily results based on factors such as your budget, previous campaign data, and market data. You really need to pay close attention to the information you see here. It is important that the size of your audience is not too large, which usually means that you haven't targeted it enough, but also not too specific since the audience members may be so small that it would not be worth running an ad campaign. When you are satisfied with your target audience, be sure to save it so that you can refer to it again and maybe use it for future Instagram ad campaigns. We recommend that you create a few different audiences so that you can test which works the best. This is possible by creating multiple ad sets, which you will see at the top of the Instagram Ads Manager. Content and budget. If you get your message right in the content that you use for your Instagram ads, then you will experience a lot more success. You need to ensure that your message is on point and really resonates with your target audience. What kind of voice will you use in your content? Do you want a formal voice or a casual one? Think about the tone you are going to use as well. Here you have the option of being in your face and provocative or friendly and warm. You will get the best results from your Instagram ads if you are consistent. Around 60% of the top brands that use Instagram ads use the same filter for their content. They consistently put out the same message, which helps to reinforce their brand in the minds of their target audience. Your message will really resonate if you know what your target audience really wants. This will help you to decide what kind of angle you should go for with your Instagram ads. Do you want to inspire your audience? If you are targeting millennials, then you could promote a cause that you support as this is popular with them. The best content creates a connection with people. You can use Instagram Analytics to tell you which content your target audience has responded the best to in the past. Once you know this, you can make sure that you use this in your ads. You need to accept that you will probably not get it right first time with the content that you use for your Instagram ads. Be prepared to analyze previous campaigns and what your competitors are doing to optimize your content. Instagram hashtags. You can create a special hashtag for your Instagram ads campaign. The reason for coming up with your own unique hashtag is because it will make the discovery of your content easier for your target audience. You can build communities around hashtags, and also with a hashtag you can set trends and generate a real buzz. It really isn't difficult to create your own hashtags, but the real trick is to create one that will drive engagement with your target audience. Short hashtags are the best because they are easier to remember as well as it being easier to type in. You also need to make it as clear as possible what your hashtag means. Always test your hashtag ideas for uniqueness, as you don't want to use one that someone else has used. When people interact with your hashtags, respond swiftly to build on the awareness and buzz. Decide on a budget for your Instagram ads. You have two options when it comes to setting a budget for your Instagram ads. 1, a daily budget. 2, a lifetime budget. When you set a daily budget, you